Okay, so now alternate refrigeration systems or low temperature refrigeration systems is also known as cryogenics. Now the meaning of cryogenics is any refrigeration system in which we maintain the temperature below minus 100 degrees Celsius. Now we have already seen many systems. We have already studied vapor compression system, and we have already discussed yesterday we discussed vapor absorption system. Now all these systems, they fail to achieve temperature below minus 100 degrees Celsius, except very few refrigerants like R13, R122, and R112, and R, I think there is one more refrigerant, I can't recall the name, except 2 or 3 refrigerants which cannot freeze even at minus 150 degrees Celsius. So we left with very limited options in case we want to go for ultra low refrigeration system. View all these constraints, these terms come into existence as alternate refrigeration systems. So there are few refrigeration systems which are devised just to overcome these constraints. कोई join कर रहा है क्या? So these are the list of few refrigerants, few different methods. First is a cascade method. कैस्केड मेथड को हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एक तरह से. इसको हम ये भी कह देते हैं मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिस्टम. मल्टी स्टेज और कंपाउंड वेपर कंप्रेशन सिस्टम. सो फर्स्ट वन जो है, जो सबसे पहले जो ट्राई किया था हिस्ट्री में, दैट वाज अ कैस्केड सिस्टम. सो सेकेंड इज़ अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मैन्युफैक्चरिंग. ये भी सिलेबस में है. अदरवाइज दिस इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग लो टेम्परेचर, बट इट इज़ अ इनडायरेक्ट मेथड in which we first produce solid carbon dioxide which can be used to preserve or to maintain temperature around minus 78 degrees Celsius, minus 78, but it is not ultra low temperature. Then Linde system and Claude system. Linde system is very famous system to liquefy the gases like nitrogen, helium and hydrogen. And Claude system, both these systems are very interesting. Yes. Then there is another method which is also known as thermoelectric refrigeration system. I have given the overview of regarding this system. Thermoelectric is a refrigeration which is based on solid state electronics, solid state system. It is a solid state system in which there is no use of refrigerant. And last one is a steam jet refrigeration system. ये थोड़ा सा जो है डेरी डिफरेंट जो है कंसेप्ट है. इसमें हम स्टीम को यूज़ करते हैं. वी यूज़ स्टीम एट वेरी हाई प्रेशर, and then by use of that steam and by use of throttling process or nozzle and this diffuser arrangement, we can maintain or we can generate a very low temperature space region through this application. So these are the few alternative methods. So first let us understand why low temperature is required, what is the application of this low temperature systems, and what are the constraints with the existing system. So if we want to achieve a very low temperature inside the evaporator, then for that we need a very low pressure inside the evaporator. At the same time we also need to increase the condensing pressure. Load on the compressor has been increased many times. ना बेसिकली हमें लो टेम्परेचर एफिशिएंट सिस्टम जो है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है. ना मैंने आपको पहले भी बहुत बताया, देयर आर मैनी डिफरेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, देयर आर मैनी एन नंबर ऑफ मेडिकल एप्लीकेशंस, देयर आर एन नंबर ऑफ कमर्शियल एप्लीकेशंस जिसमें हमें we need to maintain very low temperature. Now in many industrial applications like liquefaction of helium, liquefaction of hydrogen, liquefaction of carbon dioxide and many other like gases, all these process needs very low temperature. So first we look at the cascade refrigeration system. Now how it works.
Now in this system you can see there are two compressors, and there is a condenser, there is a evaporator, two expansion valves. Now in this case, first the low temperature is produced at the compressor, which is shown by 1 to 2, and high temperature cascading system is shown by compressor 5 to 6. Now first what we do is, first we produce the low temperature inside this evaporator. This is a sort of evaporator, but here it is shown as a, first हमने क्या किया, first we have यहाँ से cascade जो है फर्स्ट evaporator में हमने इसको जो है यहाँ से low temperature generate किया from 8 to 5. So we are generating low temperature over here, and then we are compressing the vapors from 5 to 6, then 6 to 7 we are condensing the condenser, then we are expanding here. So this refrigeration effect जो है, this refrigeration effect produced is used to circuit, और यहाँ पे इसका circuit है यहाँ से 1 से लेके 2 तक it is compression process, 2 से लेके 3 तक cascade condensation, 2 से लेके 3 तक यहाँ पे 2 to 3, here is 2, this is 3. So this is the heat exchanger and this is the evaporator for the first circuit. So यहाँ से हमने यहाँ पे क्या किया, एक तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कंडेंसर है इसका, ये कंडेंसर, इसका जो कंडेंसर है फॉर सेकंड सर्किट, इट इज़ अ evaporator for the first circuit. So यहाँ से 2 to 3 it is a condensation process, then 3 to 4 is expansion at a very low temperature, 3 to 4 यहाँ expansion हुई है. Now so 4 to 1 is a evaporation process over here. So this is the diagram for the cascade system. So this is similarly, this is a temperature entropy diagram. Here again there are two circuits. We have compressed the refrigerant in the secondary circuit up to the superheated state. Then 6 to 2 is a de-superheating, 2 to 7 is a condensation process, 7 to 8 is the expansion process, 8 to 5 is again there is a refrigeration process inside the evaporator, but this is the condenser for the second circuit. Then 1 to 2 is again superheating of the second refrigerant in the secondary circuit. So this is the theory of cascade refrigeration system. Anything you like to ask? Any question? We can add another circuit like in this second case. ये उसी तरह से काम करेगा. यहाँ पे जो है ये लास्ट वन जो है, दिस इज़ द फाइनल टेम्परेचर, अल्ट्रा लो टेम्परेचर वी आर गेटिंग ओवर फ्रॉम 4 to 1 at point A. So this is a low temperature cascade system. So this consists of 3 circuits. Hello. Now next is the production of solid carbon dioxide. This is a 3-stage compression system with water and flash intercooler for production of solid carbon dioxide. ये तो ने पढ़ा हुआ सिस्टम ऑलरेडी, 3-stage system, 2-stage system, intercooler, low pressure compressor, high pressure compressor. This is flash chambers. These are the water intercoolers. So ये same वही system है. This system is employed just to produce the solid carbon dioxide at this end. यहाँ पे produce होगा और यहाँ से जो है मेकअप CO2 हम इसको कंटिन्यूसली इसमें मतलब कॉस्ट इज अराउंड 330 किलोवाट पर टन ऑफ CO2 produced. Now the liquefaction of air is an important industrial process because it is used for the production of liquid oxygen, nitrogen, hydrogen, helium and many other gases by fractional distillation. इसकी बहुत wide applications हैं. So that is why this system is very famous these days. Moreover, it is very economical. It does not require any you can say multi-stage compression system and cascade system, which needs lot of equipments, lot of big equipments and a lot of space, lot of requirement of power and maintenance. It is very simple system as you can see over here. बहुत सिंपल है. यहाँ पे एक ही कंप्रेसर है, एक हीट एक्सचेंजर है और एक एक्सपेंशन वाल्व है यहाँ पे, और यहाँ पे जो नीचे कलेक्टर या सेपरेटर्स को कहते हैं यहाँ पे, जिसमें फ्लैश जो है ऊपर से सेपरेट कर रहे हैं, नीचे हम वी आर कलेक्टिंग द लिक्विड
लिक्विड एयर या लिक्विड जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ बॉटम साइड से हम उसको ड्रेन कर रहे हैं. सो अब ये वर्क कैसे कर रहा है, देखो बड़ा सिंपल मेथड है इसका. अब यहाँ पे देखो, द इक्विपमेंट इंक्लूड्स अ कंप्रेसर, a heat exchanger and a separator. In this system, the atmospheric air is compressed isothermally in a compressor. So this is all the same as in the previous cases, between 0.1 to 2 to a pressure of 100 to 200 bars. This high pressure air is cooled to about minus 106.7 degrees Celsius in a heat exchanger between 0.2 to 3. The cooled air from the heat exchanger is throttled between 0.3 and 4 to atmospheric pressure and the temperature, and we ultimately we achieve a temperature of minus 190 degrees Celsius. I now try to understand कि कैसे काम करता है. Now first what we take a air from here. यहाँ से जो है atmospheric air at atmospheric pressure, it is taken inside from here. Then it goes inside the compressor at point 1. It compresses and comes out from point 2, and we have just studied that the final compression pressure is 200 bars. So let us say the pressure is the discharge pressure is 200 bars. Now after compression, obviously the air becomes very hot at very high pressure. It becomes very hot, so we pass it through this heat exchanger. Now here at one left side we have a hot compressed air at very high temperature. Now let us see what is on the right side. Now on the right side, अब यहाँ से इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं. Now this hot compressed air is then expanded in through this expansion valve. Now when it is expanded, it is temperature is significantly lowered and it reaches up to minus 190 degrees Celsius. So at this temperature, at this temperature and at that particular pressure, this air is liquefied. Now when it is liquefied, some portion of it is converted into vapors. So these vapors have been collected from the top side of this separator. You know that separator is mostly they are centrifugal, they based on centrifugal action. So it separates out the vapors or flash from the liquefied this air. These vapors are still at a very low temperature. अगर यहाँ पे minus 190 degree Celsius temperature है, तो obviously the vapors will also have a temperature near about minus 190 degree Celsius. So these vapors are then passed through this heat exchanger from the right side. Now at one end the temperature of the vapors is near about 190 degree Celsius. At other left side we have a hot air which is coming from the compressor whose temperature is about, यहाँ कहीं है temperature, यहाँ से 30 degree पे हमने air को लिया. I don't know what is the temperature at this point. So whatever the temperature, so it has been, the compressed air is cooled down significantly when it reaches to 0.3, and then when since it is already been cooled with the help of these vapors, it is then expanded and we are able to achieve this temperature. So this is a simple Linde system to liquefy the air or liquefy other gases. Now this is temperature enthalpy diagram, entropy diagram. अब यहाँ पे देखो कैसे काम कर रही है. Now 1 to 2 क्या है, isothermal compression हो रही है 1 to 2. 2 to 3 is a compression के बाद क्या किया हमने, इसका temperature reduce किया. So we are reducing the temperature from 2 to 3. Compression isothermal compression है, तो इसका मतलब उसका जो है isothermal का मतलब है we keep the temperature same but we increase the pressure. So we know that pressure at point 2 is 200 bars, but temperature will always we keep the temperature constant. तो यहाँ पे इसका मतलब जितना भी जिस टेम्परेचर पे एयर हम इनटेक ले रहे हैं, जो उसका जो सक्शन टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पे एयर को हम कंप्रेस कर रहे हैं. तो इट मीन्स टेम्परेचर जो कंप्रेस्ड एयर का टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, इट इज़ अराउंड minus 30 और 40 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ से कूल होने के बाद वट एवर द टेम्परेचर इज -10 डिग्रीज -106 डिग्री सेल्सियस एट पॉइंट 3. अब यहाँ पे हमने क्या किया, उसको हीट एक्सचेंजर में इसको कूल किया. देन फ्रॉम 3 to 4 वी हैव एक्सपेंडेड दिस कंप्रेस्ड एयर. सो द फाइनल टेम्परेचर बिकम्स -190 डिग्री सेल्सियस एट पॉइंट 4. यहाँ पे देखो, दिस इज द पॉइंट 4
and this is minus 1 degree Celsius, 190 degrees Celsius. From 4 to 5, this is a constant temperature because it is liquefied at a constant temperature, and we removed this gas from the bottom side of the separator at minus 190 degrees Celsius. So this is a simple working of Linde system. Again 4 to 6 is a, यहाँ से जो वेपर्स कलेक्ट कर रहे हैं, वी आर these are vapors, again they are generated at the same temperature minus 190 degree Celsius. From 4 to 6 we are touching the ड्राई सेचुरेटेड लाइन. ये ड्राई सेचुरेटेड लाइन है जो भी एयर की है, और ये है लिक्विड सेचुरेटेड लाइन. 0.5 is lying on the liquid line, 0.6 is lying on the dry saturated line. So 6 to 7 is we are these cooled air at minus 190 degrees Celsius, they are absorbing the heat of the compressed air. तो they are heated up to 0.7. यहाँ तक ये हीट हुए. Then 7 to 1 क्या है, चलो they are showing the some surrounding heat is absorbed by this. So यहाँ से लेके then 1 से लेके 2 तक इसको compress किया फिर. So this is a simple temperature entropy diagram for Linde system. Now this is the modified version of this system. अब यहाँ पे क्या है, let us see यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ से एयर को हमने इनटेक किया. let us say air is coming at atmospheric pressure and temperature is 40 degree Celsius. 40 पे हमने इसको isothermal compression किया. Isothermal means we keep the temperature constant while compression. So at point 2 the pressure becomes 200 degree Celsius, temperature remains 40 degree Celsius. From 2 to 3 we remove the heat from that compressed air. Then we are passing this somewhat cooled air, compressed air, and from this this heat exchanger. Now this is a vapor compression evaporator. अब ये एक उसी तरह से का सिस्टम है जैसे कि कैस्केड सिस्टम था, कि कोई भी एक वेपर कंप्रेशन सिस्टम यहाँ लगा रखा है, जिससे कहा कि एवापोरेटर जो है इज एक्टिंग एज अ हीट एक्सचेंजर फॉर दिस सिस्टम. तो उसका जो एवापोरेटर है, इट इज़ प्रोड्यूसिंग वेरी लो टेम्परेचर ओवर हेयर, एंड दिस रेफ्रिजरेंट इज taking away the heat of this compressed air. So again we cool the compressed air up to 0.4 by use of this additional heat exchanger, additional vapor compression evaporator. Then again we pass this cooled compressed this air from this third heat exchanger. अब थर्ड वाला तो वही है, सेम है, जहाँ पे कि compressed air आ रही है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से जो यहाँ पे जो इसके वेपर्स हैं which are coming out at minus 190 degrees Celsius, they are cooling these compressed air. So these vapors are then first they take away heat from at this end, then these vapors become somewhat hot, but still they are not very hot as compared to the compressed air temperature. So they are again passed to the second heat exchanger जो हमने सबसे पहले देखा था. यहाँ पे they again take up the heat of this compressed air which is at a quite high temperature. So we break down the this process in two subsystems. So इस तरह से इसकी एफिशिएंसी जो है इंक्रीज हो सकती है. तो ये इसका जो है एडवांस वर्जन है. So this is the same diagram somewhat with some modifications. Now this is a Claude system. अब Claude system भी कुछ वैसा ही है जिसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें हमने क्या किया, आफ्टर वी इंस्टेड ऑफ कंप्रेसिंग इन अ सिंगल स्टेज, मतलब हमने एक बार कंप्रेस कर दिया एयर को और फिर उसको हमने बार बार उसको ठंडा किया, फिर यहाँ उसको कूल किया, फिर यहाँ कूल किया. इंस्टेड ऑफ कंप्रेसिंग इट इन सिंगल इन अ वन गो, वी आर कंप्रेसिंग इन अ 2 स्टेजेस या 2 गोस. फर्स्ट थोड़ा कंप्रेस किया, फिर इसको कूल किया, फिर कंप्रेस किया और फिर कूल किया. तो इससे इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा इंक्रीज होगी, एंड देयरफॉर क्लाउड सिस्टम इज़ मोर एफिशिएंट एंड मोर इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू द लिंडे सिस्टम. ये पढ़ लेना कि इसमें कितना डिफरेंस है, देखने में कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये भी समझ आ जाएगा आपको, सेम वैसे ही है. सो दीज आर द 3 सिस्टम्स, वी हैव 4 सिस्टम्स मैंने आज बता दिए हैं. 2 सिस्टम रह गए हैं, वो आपको मैं पोस्ट कर दूँगा. तो ये आपका जो एडवांस रेफ्रिजरेशन सिस्टम है कम्प्लीट हो गया. From tomorrow onwards we will start psychometric process. Any question? Any question? Student है
ओके, नाउ दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड सिस्टम ओवर लिंडे सिस्टम, ये पढ़ लेना. इन क्लाउड सिस्टम द एयर इज टू बी compressed only up to 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 40 बार्स एज कम्पेयर टू 200 बार्स इन लिंडे सिस्टम. ये देखो, ये फर्स्ट डिफरेंस है. अब जितना कंप्रेशन हमारा जो है प्रेशर जितना कम होगा उतना ही हमारा जो है मैकेनिकल जो पावर है उसकी कॉस्ट कम होगी. तो इसलिए क्लाउड सिस्टम डायरेक्टली यहाँ से देखो उसका 1/4 भी नहीं है. सेकंड पॉइंट क्या है, अबाउट 80% ऑफ द एयर इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबल इन द एक्सपेंडर एंड रिमेनिंग 20% ऑफ द कंप्रेस्ड एयर इज सब्जेक्ट टू इरिवर्सिबल थ्रॉटलिंग इन थ्रॉटलिंग. सो इसमें क्लाउड सिस्टम में 80% तो एयर को एक्सपेंड कर लिया हमने रिवर्सिबल सिस्टम से. तो रिवर्सिबल सिस्टम इज ऑलवेज सुपीरियर दैन द इरिवर्सिबल प्रोसेस और इट इज़ मोर एफिशिएंट दैन द इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो इसमें 80% जो है एक्सपेंडेड किया बाय रिवर्सिबल प्रोसेस, देख लेना उसमें कैसे किया है. बट इन केस ऑफ लिंडे सिस्टम ऑल द एयर इज थ्रॉटल्ड इरिवर्सिबली. सो यहाँ पे भी एफिशिएंसी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.